When nitric acid is added to magnesium hydroxide, it yields magnesium nitrate and a byproduct Y. The correct representation of this reaction using a balanced chemical equation would be ऑप्शन सी और डी में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला करेक्टली रिप्रेजेंट किया हुआ है, ऑप्शन ए और बी में नहीं, तो इसलिए हमारे दो आंसर शॉर्टलिस्ट हो जाते सी और डी। व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर दे यील्ड सॉल्ट एंड वाटर। वाटर ऑप्शन बी और डी में गिवन था, तो हमारी जो करेक्ट इक्वेशन है, जो बिल्कुल करेक्टली रिप्रेजेंट करी है, वो है ऑप्शन डी। दैट्स वाई डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए और बी में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला इनकरेक्टली रिप्रेजेंट किया हुआ है, ऑप्शन ए और सी में हाइड्रोजन गैस गिवन है जो कि इनकरेक्ट है, वाटर होना चाहिए था। दैट्स वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेट ऑफ रिएक्टेंट्स that produces a combination of soluble and insoluble salts is, as you know, usually solutions of soluble salts are mixed during the reaction exchange of ionic radicals, that is, metallic radicals exchange with acidic radicals takes place to produce two new salts. One of the salts is insoluble and the other is soluble. The insoluble salt precipitates solidify in solution. तो हमें गिवन ऑप्शंस में से ऐसा ऑप्शन चूज करना था जिसमें हमें दो सॉल्ट्स गिवन हो, जो ऑप्शन डी में थी। दैट्स वाई डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज मैग्नीशियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। हमें ऐसा ऑप्शन पहचानना था जिसमें हमें दो सॉल्ट्स मिले, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल सॉल्ट, जो ऑप्शन डी में ही पॉसिबल थी। जब मैग्नीशियम सल्फेट रिएक्ट करेगा बेरियम क्लोराइड के साथ, तो बेरियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड बनेंगे। बेरियम सल्फेट इज सॉलिड जो प्रिसिपिटेट्स आउट हो जाएगा, और मैग्नीशियम क्लोराइड इज सोल्यूबल सॉल्ट, बेरियम सल्फेट इज इनसोल्यूबल सॉल्ट। ऑप्शन ए में जब कॉपर रिएक्ट करेगा नाइट्रिक एसिड के साथ, तो हमें मिलेगा कॉपर नाइट्रेट, वाटर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सिर्फ एक ही सॉल्ट मिल रहे हैं, तो मीन्स ऑप्शन ए इनकरेक्ट था। जब जिंक रिएक्ट करेगा कॉपर सल्फेट के साथ, तो हमें मिलेगा जिंक सल्फेट और कॉपर। इसमें भी हमें एक ही सॉल्ट मिला है, जबकि हमें क्या चाहिए, दो सॉल्ट चाहिए। जब पोटेशियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हमें मिलेगा पोटेशियम सल्फेट और कार्बोनिक एसिड। हमें इसमें भी दो सॉल्ट नहीं मिल रहे, तो हमारा करेक्ट आंसर ए की था, वो था ऑप्शन डी, दैट इज मैग्नीशियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड reacts to form combination of soluble and insoluble salt. Soluble salt is magnesium chloride, insoluble salt is barium sulfate. Means option D is the correct answer. Next question. Bronsted-Lowry theory was able to explain, as you know, according to Bronsted-Lowry theory, an acid is a substance, molecule or ion that can donate a proton to another substance. A base is a substance that can accept a proton from another substance. तो इसीलिए गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया गैस। एज यू नो, अमोनिया कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन एंड फॉर्म अमोनियम आयन, दैट्स वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Bronsted-Lowry theory was able to explain the basic nature of ammonia gas. Means option D is the correct answer. Next question. Alina titrates 0.0450 molar aqueous solution of sulfuric acid with 25 cm cube of 0.120 molar aqueous solution of potassium hydroxide using phenolphthalein as an indicator. How much volume of aqueous solution of sulfuric acid will she utilize for this titration? सबसे पहले हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे बिटवीन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ताकि हमें उनके नंबर ऑफ मोल्स पता चल सके। मोलैरिटी ऑफ एसिड इज 0.0450 मोलर
वॉल्यूम ऑफ एसिड हमें मालूम करना है, इसलिए x। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड इज 1, जो हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मालूम किए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस इज 2, जो हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मालूम किए। मोलैरिटी ऑफ बेस इज 0.120 मोलर। वॉल्यूम ऑफ बेस इज 25 cm3। फॉर्मूला है Ma मल्टीप्लाई बाय Va डिवाइड बाय Na इज इक्वल्स टू Mb मल्टीप्लाई बाय Vb डिवाइड बाय Nb। मैंने एसिड के लिए A यूज़ किया है, बेस के लिए B, आप चाहो तो 1 और 2 भी यूज़ कर सकते हो। मोलैरिटी ऑफ एसिड इज इक्वल्स टू के इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही है तो उस तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी, डिवाइड। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड डिवाइड हो रहे हैं इज इक्वल्स टू के इस तरफ तो उस तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। फिर जस्ट हम वैल्यू पुट कर देंगे, मोलैरिटी ऑफ बेस, वॉल्यूम ऑफ बेस, मोलैरिटी ऑफ एसिड की, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड के और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस के। आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करो, इसका आंसर आ रहा है 33.33 cm3, दैट इज ऑप्शन बी, मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। आप इसको कैलकुलेटर से एक दफ़ा सॉल्व करके चेक कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन दैट exemplifies Arrhenius theory is, as you know, according to Arrhenius concept, acid is a substance which dissociates in aqueous solution to give hydrogen ions. On the other hand, base is a substance which dissociates in aqueous solution to give hydroxide ions. That's why जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, जो करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है आर्हेनियस थ्योरी को। कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में हाइड्रोक्साइड आयंस गिवन है, फिर ये क्यों इनकरेक्ट है। इसलिए अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, बेस इज अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट्स इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोक्साइड आयन। यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन अमोनिया के डिसोसिएशन की वजह से नहीं आ रहे। सेम रीज़न ऑप्शन डी में भी है, इसीलिए ऑप्शन बी और ऑप्शन डी इनकरेक्ट है और ऑप्शन सी करेक्ट एग्जाम्पल है आर्हेनियस थ्योरी की, मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ लुईस बेस बिकॉज इट टेंड्स टू, गिवन ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर, मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एज यू नो, according to Lewis' concept of acids and bases, an acid is a substance, molecule or ion which can accept a pair of electrons, while a base is a substance, molecule or ion which can donate a pair of electrons. That's why option D is the correct answer. Next question, 1 mole of compound X gives 2 moles of ions on dissociation in aqueous medium. When compound X reacts with calcium carbonate, it causes bubbling of an acidic gas. The compound X is a dilute solution of, फर्स्ट कंडीशन हमें गिवन है कंपाउंड X का 1 मोल 2 मोल्स देता है आइंस का ऑन डिसोसिएशन इन एक्वस मीडियम। सल्फ्यूरिक एसिड 3 मोल्स दे रहे हैं आइंस के, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 2 मोल्स दे रहे हैं आइंस के, तो मीन्स ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। सेकेंड कंडीशन हमें गिवन है जब कंपाउंड एक्स रिएक्ट करता है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ तो बबलिंग होती है एसिडिक केस की, वो तभी पॉसिबल है जब कोई एसिड हो, क्योंकि आपको पता है व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट इट यील्ड्स सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एसिडिक गैस है। और फिर इस हिसाब से देखा जाए तो एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है जो है ऑप्शन बी, दैट्स वाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, citrus fruits have high acidity with low pH. This statement indicates that citrus fruits have low pH means high concentration है hydrogen ions की, that's why option B high concentrations of hydrogen ions is the correct answer, means option B is the right answer. A compound with the formula C2H3O2Na, sodium acetate, is formed when sodium carbonate reacts with
When acid react with metal carbonate, it forms salt, carbon dioxide and water. सोडियम एसिटेट इज सॉल्ट, तो हमें क्या पहचानना है? एसिड को। तो एसिड ऑप्शन डी में गिवन था, दैट इज इथेनॉइक एसिड। दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इथेनॉइक एसिड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन स्टोरिंग ethanol in the science laboratory, which symbol is the most appropriate to place it on its label? Ethanol is flammable. Flammable material catches fire immediately on exposure to flame. हमें गिवन लेबल्स में से पहचानना था कौन सा लेबल फ्लेमेबल का है। ऑप्शन डी है, दैट्स वाई डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए रिप्रेजेंट कर रहा है एक्यूट टॉक्सिसिटी को, ऑप्शन बी करूसिव को, ऑप्शन सी ऑक्सीडाइजिंग को। हमें फ्लेमेबल पहचानना था, दैट्स वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which pair of alkanes are isomers of each other? As you know, the compounds are said to be isomers if they have the same molecular formula but different arrangement of atoms in their molecules or different structural formulae. Just count carbon atoms ताकि हमें पता चल जाए कौन isomers है एक दूसरे के। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। 1 और 4 में कितने कार्बन एटम्स है? 5, मीन्स 1 और 4 एक दूसरे के आइसोमर्स है। दैट्स वाई ऑप्शन बी 1 and 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द गिवन मॉलिक्यूल इज। हमें इस मॉलिक्यूल में फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है। हमें क्या नजर आ रहा है? 2 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। 2 ऑक्सीजन एटम आइदर ईस्टर्स में होते हैं या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में। चूंकि एक ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द गिवन मॉलिक्यूल इज ऑप्शन डी, कार्बोक्सिलिक एसिड, मींस डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन alkene having 8 carbon atoms is। As you know, general formula of alkene is CnH2n. Just put n is equals to 8. C8H16. 8 2s are 16. Means correct answer is option B, that is C8H16. B is the right answer. Next question. Butane can be converted into secondary butyl by the। ब्यूटेन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन से सेकेंडरी ब्यूटाइल में कन्वर्ट नहीं होगा, रिमूवल से होगा। हमारे सी डी शॉर्टलिस्ट हो जाते। जब हम कार्बन 1 से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो एन ब्यूटाइल फॉर्म होता है। हमसे कहा गया सेकेंडरी ब्यूटाइल। रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम C2 कार्बन इज द करेक्ट आंसर। जब हम सेकेंड कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो सेकेंडरी ब्यूटाइल बनता है, दैट इज ऑप्शन डी, मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर। Next question. Two successive members of a homologous series differ by a mass unit that is equivalent to। As you know, successive members of the homologous series differ by 1 unit of CH2 and 14 units in their relative molecular mass. That's why option C, 14 AMU is the correct answer. Complementary base pairing in deoxyribonucleic acid DNA allows the molecule to। गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज रेप्लिकेट इटसेल्फ एक्यूरेटली, मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग मीन्स आपको पता है एडिनिन हमेशा पेयरिंग करता है थाइमिन के साथ डीएनए में, और ग्वाइनिन हमेशा पेयरिंग करता है साइटोसिन के साथ। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग क्या करती है? हेल्प करती है डीएनए मॉलिक्यूल को कि वो एक्यूरेटली रेप्लिकेट हो। दैट्स व्हाई ऑप्शन ए, रेप्लिकेट इटसेल्फ एक्यूरेटली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीएस एंजाइम
ब्रेक्स डाउन प्रोटीन्स इनटू गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज अमाइनो एसिड्स. As you know, proteins are highly complicated nitrogenous compounds made up of amino acids. Proteins are polymers of amino acids. That's why D, amino acids is the correct answer. Next question. The given statements describe a micronutrient. It cannot be produced naturally by the human body. It supports the immune system of the human body. It is essential for cell division and growth. It is richly found in shellfish and meat. This micronutrient is given options में से जो correct answer है वो है option A, that is zinc. This micronutrient is zinc. Means option A is the correct answer. Next question. If 3 molecules of palmitic acid react with 1 molecule of propane 1,2,3-triol, then the resultant macromolecule is of given options में से जो correct answer है वो है option A, that is fat. Means option A, fat is the correct answer. As you know, lipids are macromolecules made up of fatty acids. Lipids include oils and fats. Oils and fats are esters of long-chain carboxylic fatty acids with glycerol. Palmitic acid क्या है? फैटी एसिड है जिससे हमने आइडेंटिफाई किया. ए, फैट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द गिवन फिगर शोज अ पार्ट ऑफ अ मैक्रोमोलिक्यूल. द मोनोमर एट एक्स आर जॉइंट थ्रू r/n. मीन्स हमें इस लिंकेज को आइडेंटिफाई करना है. तो गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज पेप्टाइड लिंकेज. मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर. एज यू नो, two amino acids link through peptide linkage. Peptide linkage is formed by the elimination of water molecule between the amino group of one amino acid and carboxyl acid group of another. When thousands of amino acid polymerize, they form protein. Means option C, peptide linkage is the correct answer. Next question. Thousands of glucose monomers make up the macromolecule of starch through the process of given options में से जो correct answer है वो है option C, that is condensation. Means C, condensation is the correct answer. As you know, condensation is a chemical process by which two molecules are joined together to make a larger, more complex molecule with the loss of water. It is the basis for the synthesis of all the important biological macromolecules like carbohydrates, proteins, lipids, nucleic acids from their simpler subunits. That's why option C, condensation, is the correct answer. Next question. Monosaccharides differ from disaccharides on the basis of their given options में से जो correct answer है वो है option B, that is hydrolysis. B, hydrolysis is the correct answer. As you know, monosaccharides are the simplest sugars which cannot be hydrolyzed, whereas disaccharides can be hydrolyzed. That's why B, hydrolysis is the correct answer. Monosaccharides differ from disaccharides on the basis of their hydrolysis. Next question. A molecule of fructose contains 5 hydroxyl groups and 1 given options में से जो correct answer है वो है option C, that is ketone group. A molecule of fructose contains 5 hydroxyl groups and 1 ketone group. Means C is the correct answer. The chemical reaction that does not contribute to acid rain is given options में से जो correct answer है वो है option D. बेस और एसिड रिएक्ट करें, सॉल्ट और वाटर बना रहे. सॉल्ट क्या होती है? न्यूट्रल होती है. That's why option D is the correct answer. ऑप्शन A, B, C में अगर आप प्रोडक्ट्स को गौर से देखो तो सारे एसिडिक प्रोडक्ट है जो कंट्रीब्यूट करते हैं एसिड रेन में. That's why option D is the correct answer, which does not contribute to acid rain. Means D is the correct answer. Next question.
Which of the following statements is true for troposphere? Option A. The middle portion of troposphere comprises of the ozone layer. Incorrect. The middle portion of stratosphere comprises of the ozone layer. Option B. The troposphere is situated between stratosphere and mesosphere. Be incorrect. The stratosphere is situated between troposphere and mesosphere. Option C. The troposphere hardly contains any water so it lacks cloud formation. भी incorrect है. Clouds मौजूद होते हैं troposphere में. Option D is the correct answer. That is, the temperature in the troposphere decreases with the increase in altitude. Means option D is the correct answer. Next question. What is ozone? As you know, ozone is an allotropic form of oxygen consisting of 3 oxygen atoms. That's why given option: an odorless gas, a transparent gas, an isotope of oxygen, an allotropy of oxygen में से जो correct answer है वो है option D. Ozone is an allotropy of oxygen. Means D is the correct answer. Next question. It is advised to switch off gas heaters before going to sleep. This is because the combustion of natural gas in a poorly ventilated room produces carbon monoxide. The inhalation of carbon monoxide for a long time may reduce the blood's oxygen level. Given options में से जो correct answer है वो है option A, that is oxygen level. As you know, carbon monoxide is a poisonous gas. Being colorless and odorless, its presence cannot be noticed easily and readily. When inhaled, it binds with the hemoglobin most strongly than that of oxygen, thus hindering the supply of oxygen in body. Exposure to higher concentration of carbon monoxide causes headache and fatigue. If inhaled for a longer time, it results in breathing difficulties and ultimately death. It is the reason burning is not allowed in closed places. It is advised to switch off coal or gas heaters, cooking range, etc. before going to sleep. Next question. Which of the following is a greenhouse gas? Given options में से जो correct answer है वो है option C, that is carbon dioxide. Means C, carbon dioxide is the correct answer. As you know, carbon dioxide in the atmosphere acts like a glass wall of a greenhouse. It allows ultraviolet radiations to pass through it but does not allow the infrared radiations to pass through it. It traps some of the infrared radiations emitted by the Earth. Hence, increased concentration of carbon dioxide layer absorbs the infrared radiations emitted by the Earth's surface. That prevents heat energy escaping from the atmosphere. It helps to stop surface from cooling down during night. As the concentration of carbon dioxide in air increases, less heat energy is lost from the surface of the earth. Therefore, the average temperature of the surface gradually increases. This is called greenhouse effect. That's why given options में से जो correct answer है वो है option C. Carbon dioxide is the greenhouse gas. Means C is the correct answer. Next question. Depletion of ozone layer causes an increase in the amount of ultraviolet UV radiations that reaches the Earth's surface. In human beings, exposure to higher UV levels may cause cataract and skin cancer. Means 2 and 4 is correct. Cataract is मोतिया, जिसको हम आम जबान में मोतिया कहते हैं. एस्थमा और डायबिटीज इनकरेक्ट है. 2 और 4 करेक्ट है. तो ऑप्शन सी में दोनों करेक्ट आंसर है. दैट इज 2 and 4. मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन ए, बी
और डी इनकरेक्ट है क्योंकि उसमें 1 और 3 प्रेजेंट थे। और हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, दैट इज कैटरेक्ट एंड स्किन कैंसर। द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड यूज्ड डोमेस्टिकली टू रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस फ्रॉम वाटर इज, गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज बॉइलिंग प्रोसेस, मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। As you know, temporary hardness is because of presence of bicarbonates of calcium and magnesium. Temporary hardness of water is easily removed by boiling water. On boiling, calcium bicarbonate decomposes to produce insoluble calcium carbonate, which precipitates out of the solution. Means option B, boiling process is the correct answer. Next question. The correct set of properties that allows water to dissolve all ionic and many molecular compounds is its, as you know, water is the universal solvent because it can dissolve almost all the minerals. Its ability to dissolve substances is because of two unique properties of water. Number one, polarity of water molecule. Number two, exceptional हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी। ऑप्शन डी में दोनों करेक्ट आंसर है, दैट्स वाई डी इज द करेक्ट आंसर। इट्स पोलैरिटी एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मीन्स डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर एग्रीकल्चरल वेस्ट्स दैट कॉज वाटर पोल्यूशन? एग्रीकल्चरल इज द कीवर्ड जिससे हमने पहचाना फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1 and 3 जो ऑप्शन बी में मौजूद है, मीन्स बी इज द राइट आंसर। ऑयल एंड ग्रीजेस, हैवी मेटल्स इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी। फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स आर एग्रीकल्चरल वेस्ट दैट कॉज वाटर पोल्यूशन, मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द waterborne disease which causes the human body to lose salts is, given option cholera, jaundice, hepatitis, fluorosis में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज cholera, means A, cholera is the correct answer. As you know, cholera is an acute infection caused by the bacteria Vibrio cholerae, which may be found in water contaminated by human feces. Cholera causes severe diarrhea and can be fatal. The waterborne disease which causes the human body to lose salts is A, cholera, means option A is the correct answer. Next question. In raw water treatment, the purpose of adding alum is to, given options में से जो correct answer है वो है option A, that is form flocks of suspended particles, means option A is the correct answer. In raw water treatment, the purpose of adding alum is to form flocks of suspended particles, means A is the correct answer. Next question, the process that returns water into the atmosphere is, given option deposition, precipitation, transpiration, condensation में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज ट्रांसपायरेशन। द प्रोसेस दैट रिटर्न्स वाटर इनटू द एटमॉस्फेयर इज transpiration. As you know, transpiration is the removal or exhalation of water vapors through stomata in plants. Means C, transpiration is the correct answer. The industrial process for extracting aluminium through electrolysis is, given options में से जो correct answer है वो है option C, that is whole hair out. Please check its pronunciation from Google. Means option C is the correct answer. Next question. The frictional distillation of crude oil does not yield, given option में से जो correct answer है वो है option B, that is charcoal. The frictional distillation of crude oil does not yield charcoal. That's why B is the correct answer. Kerosene, grease, wax हमें फ्रिक्शन डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल से मिलते हैं. That's why only B, charcoal is the correct answer. Next question. On an industrial scale, urea is produced by reacting ammonia with
As you know, carbon dioxide is passed through liquid ammonia under high pressure to form ammonium carbamate. When ammonium carbamate is evaporated with the help of steam, it dehydrates to form urea. Urea is produced by reacting ammonia with carbon dioxide. Means option C, carbon dioxide is the correct answer. Next question. Iron is used as a catalyst in the manufacturing of ammonia by Haber process too. As you know, catalyst is a substance that increases the rate of a chemical reaction without itself undergoing any permanent chemical change. That's why given options में से जो correct answer है वो है option B, that is speed up the rate of formation of ammonia. Means option B is the correct answer. Next question. The source or sources of hydrogen and nitrogen for the manufacturing of ammonia by Haber process is /R. As you know, ammonia is prepared by the Haber process. One volume of nitrogen from air and 3 volumes of hydrogen obtained by passing methane and steam over heated nickel catalyst is passed over iron catalyst at 450 degrees centigrade and 200 atmosphere pressure yield ammonia. Methane comes from crude oil. That's why option B, which shows the both correct answer, is the right answer. That is, source of hydrogen is oil and source of nitrogen is air. Means option B is the correct answer. Alternate to practical ATP. Use the given information to answer question number 41, question number 42 and question number 43. The neutralization of 10 cm³ of oxalic acid by sodium hydroxide was investigated by titration. The oxalic acid solution contained 9.6 gram per dm³ of the acid. The sodium hydroxide solution contained 4.0 gram per dm³ of the alkali. The sodium hydroxide solution was placed in the burette. The results of the titration were as follows. Titration number, first burette reading, second burette reading हमें given है. Next question. How many moles of sodium hydroxide will neutralize 1 mole of oxalic acid? सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे बिटवीन ऑक्सैलिक एसिड एंड sodium hydroxide. 1 mole of oxalic acid reacts with 2 moles of sodium hydroxide to form 1 mole of sodium oxalate. That's why option A, 2 mole is the correct answer. 2 moles of sodium hydroxide will neutralize 1 mole of oxalic acid. Means option A, 2 mole is the correct answer. यहाँ 2H2O था इसलिए यहाँ पे 4H2O है. नीचे वाली इक्वेशन में 2H2O नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पे 2H2O है. Next question. The concentration of the oxalic acid solution used in this titration is. हमें ऑक्सैलिक एसिड की कंसंट्रेशन गिवन है 9.6 ग्राम पर dm³. मीन्स ग्राम पर dm³ में दी हुई और हमें पूछी गई है मोल्स पर dm³ में. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑक्सैलिक एसिड का मोलर मास कैलकुलेट करना है. ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला हमें क्वेश्चन नंबर 41 में गिवन है, दैट इज H2C2O4 डॉट 2H2. कार्बन के एटम्स 2 हैं, हाइड्रोजन के 2 + 4 6, ऑक्सीजन के 4 + 2 = 6. 2 × 12 = 24, 6 × 1 = 6, 6 × 16 = 96. एटॉमिक मासेस हमें क्वेश्चन में गिवन थे. इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो ऑक्सैलिक एसिड का मोलर मास है 126. जो कंसंट्रेशन मुझे ग्राम पर dm³ में गिवन थी मैंने उससे डिवाइड कर दिया मोलर मास से, तो मुझे मोल्स पर dm³ में कंसंट्रेशन मिल गई, दैट इज 0.076 molar. Means option A is the correct answer.
Next question. The average volume of sodium hydroxide solution used in this titration is. सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेकेंड ब्यूरेट रीडिंग में से फर्स्ट ब्यूरेट रीडिंग को सब्ट्रैक्ट करेंगे. 15.1 minus 0 is equals to 15.1. 30.1 minus 15.1 is 15.0. 45.0 minus 30.1 is equals to 14.9. अब इन तीनों को हम ऐड करेंगे. तीन रीडिंग से दैट्स वाई हमने 3 से डिवाइड किया, तो हमारा आंसर आ रहा है 15.0 cm3. दैट इज ऑप्शन ए. आप इसको कैलकुलेटर से करके चेक कर लो. ऑप्शन ए 15.0 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. A student investigated a sample containing white powder by decomposing it on a Bunsen flame. It produced a gas X which turned moist litmus paper blue. Based on the given information, it can be inferred that gas X present in the tested mixture is base and alkalis turned moist litmus paper blue. तो हमें क्या पहचानना है, बेसिक गैस पहचाननी है जो ऑप्शन बी में मौजूद है, दैट इज अमोनिया. दैट्स वाई ऑप्शन बी अमोनिया इज द करेक्ट आंसर. whereas when chlorine, carbon dioxide, nitrogen dioxide added to water, they behave as acid. हमें बेसिक गैस पहचानी थी, दैट्स ऑप्शन बी अमोनिया इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर अ फ्लेम टेस्ट, salts are mixed with a few drops of concentrated hydrochloric acid to. गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज कन्वर्ट देम इनटू देयर क्लोराइड्स. मींस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. एज यू नो, बाय फर्स्ट treating a solid metal salt with a hydrochloric acid, the solid metal is converted into more volatile metal chloride. This means the metal ions in the sample vaporize easily, which facilitates the atomization process in the hot Bunsen burner flame. That's why option B, convert them into their chlorides, is the correct answer. Use the given diagram to answer question number 46 and question number 47. हमें नज़र आ रहा है टेस्ट ट्यूब 1 में एसिटिक एसिड रिएक्ट कर रहा है सोडियम कार्बोनेट के साथ. प्रोडक्ट में हमें मिल रहा है सोडियम इथेनोएट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. हमें कार्बन डाइऑक्साइड के एफर्वेसेंस नज़र आ रहे टेस्ट ट्यूब 1 में. कार्बन डाइऑक्साइड मूव करिए बेंड ट्यूब की मदद से टेस्ट ट्यूब 2 में, जहां वो रिएक्ट करिए लाइम वाटर के साथ, तो लाइम वाटर क्या हो जाएगा, क्लाउडी वाइट हो जाएगा बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. नेक्स्ट क्वेश्चन. द पर्पस ऑफ यूजिंग अ बेंट ट्यूब इन द शोन सेटअप इज टू. हमें बेंट ट्यूब का पर्पस बताना है. गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज अलाउ द मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स. मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. बेंट ट्यूब अलाउ कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मूव करने में. दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. एट द एंड ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, which results would be visible in test tube 1 and 2. टेस्ट ट्यूब 1 के अंदर हमें एफर्वेसेंस नज़र आ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के और कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम इथेनोएट. बेंड ट्यूब की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड मूव करेगी टेस्ट ट्यूब 2 में, जहां वो रिएक्ट करेगी लाइम वाटर के साथ, जिसकी वजह से लाइम वाटर टर्न्स क्लाउडी वाइट बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. दैट्स वाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. In test tube 1, effervescence plus colorless solution of sodium ethanoate would be visible. In test tube 2, lime water turns cloudy white because of formation of calcium carbonate. Means option A is the correct answer.
Next question. When a mixture of ammonical silver nitrate and glucose solution are heated on a water bath, the aldehyde group of glucose oxidizes itself and reduces the diamine silver 1 ion to metallic silver. The structural feature that makes the aldehyde very easy to oxidize is the presence of R/N। गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू द कार्बोनाइल ग्रुप, मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ब्लू फ्लेम इज प्रेफर्ड ओवर येलो फ्लेम फॉर हीटिंग पर्पसेस इन द लेबोरेटरी बिकॉज इट इज ऑक्सीडाइजिंग एंड प्रोवाइड्स मोर एनर्जी। दोनों करेक्ट आंसर ऑप्शन डी में थे, दैट्स वाई डी इज द करेक्ट आंसर। अ ब्लू फ्लेम इज प्रेफर्ड ओवर येलो फ्लेम फॉर हीटिंग पर्पसेस in the laboratory because it is oxidizing and provides more energy, means D is the right answer. Next question, a student observed the formation of scum when she/he tested the cleansing action of a soap with a sample of hard water. This insoluble scum is formed by the combination of the negative ion of the soap with, as you know, hardness is of two types. Temporary hardness is because of presence of bicarbonates of calcium and magnesium. Permanent hardness is because of presence of sulfates and chlorides of calcium and magnesium. मीन्स हमें आइडेंटिफाई करने थे गिवन ऑप्शंस में से कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन को, तो हमें क्या गिवन था ऑप्शन बी में मैग्नीशियम आयन, दैट्स वाई ऑप्शन बी मैग्नीशियम आयन इज द करेक्ट आंसर।